और ऐसे में सास बहू और बेटिया में हमने की टीम ताज से खास मुलाकात, जिसमें उन्होंने सीजन 2 के बारे में बातें की, अपने किरदारों के बारे में बताया। भाई सीजन 2 के लिए जितने फैंस एक्साइटेड हैं, उतने ये कलाकार भी एक्साइटेड हैं। तो आइए करते हैं इनसे खास मुलाकात। मैं हूं अनीता ब्रिटो और आज मेरे साथ है द वेरी टैलेंटेड टीम ऑफ ताज। हेलो, वेलकम। थैंक यू पहले तो बिग कांग्रेचुलेशंस बिकॉज वी सेलिब्रेटेड द सक्सेस ऑफ ताज विथ यू ऑल द अदर डे व्हेन यू ऑल अनाउंस्ड, जब आपने सेकंड सीजन भी अनाउंस किया था। सो कांग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उस दिन से अगर बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत। आज सोबर है हम। आज क्या सोबर है? ओके। बहुत मजा आ रहा है। बट जब पहला सीजन आया था, आई रिमेम्बर वी वर टॉकिंग, तब आपको ऐसा लग रहा था कि हाउ द शो विल टर्न आउट, हाउ विल पीपल लाइक इट, एंड वर यू एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स? ऐसा कोई रिस्पॉन्स? इतना प्यार मिलेगा ये नहीं लग रहा था, बट डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो थी हमारी, बिकॉज हमने मेहनत इतनी की है, काम ठीक ठाक किया है। इतने दिग्गज आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, तो उनके बिकॉज ऑफ देम वी फेल्ट लाइक देयर इज गोइंग टू बी समथिंग, बट इतना मिलेगा सोचा नहीं था। बट पीरियड ड्रामा हो या हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर जॉनर in India basically, because we have so much to say, so much of culture, exactly, such diverse culture. So जब आपको ये मौका मिला, you wanted to play, how happy were you when the script came, especially this script came to you? What were the feelings like? बहुत खुशी थी यार कि फाइनली काम मिल गया। पहली बात तो आपका तो पहला है, मेरा पहला है। और दूसरी बात ये कि इतना बड़ा और इतना डीप पार्ट जो खत्म ही नहीं होता है, वो हम घुसते चले जाते हैं। फॉर द फर्स्ट आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन एबल टू डिस्प्ले that I can act and I can sort of do this for a living by a part which is literally the timeline of which goes for 15 years, 15 to 16 years, and the transition of someone from being naive and timid to then all the way to that, what you can see. So yeah, it's been very very interesting, yeah, very fortunate that it happened. Very happy. Right. What about you? I was ecstatic because to get this opportunity to play Mehrun-Nisa, who goes on to become Noorjahan, who was one of the strongest characters of Indian history. I think it's amazing, and it was a huge responsibility also to portray the character, to portray all the layers and all the aspects of the character while, staying true to the character, like the one that is narrated on the script, and also staying true to the historical context. Correct. So yeah, it was challenging, but it was really rewarding. लेकिन असली reward तो तब मिलेगी जब audience देखेंगे. People are waiting. Yeah. Because एक first and season is so brilliant in the she's fab. क्या चाहिए? एक टी-शर्ट मैंने नहीं, ये पसंद तो मैं की भी थी। कहना चाहूंगा that she is absolutely amazing. मैंने तो काम किया इनके साथ, wow, तो हाँ, मैं तो मूंगफलियां खा रहा था। इनके तो सीन भी नहीं है तुम्हारे। सीन्स नहीं है, बट मैंने इनके सीन्स देखे हैं और मैं सेट पे No, जाता but था I'll एज अ tell you, फैन बॉय, I'll क्योंकि tell you. रोशनी मैम शूट कर रही है, मुझे पता था। Yeah. No, he has done lines with me a lot of times. उनका पैकअप भी हो जाता था, but he has sometimes stayed back and done lines with me. मैंने अपने How सलीम sweet. बनने की सलीम आरज़ू बनने ऐसे की पूरी कर आरज़ू पूरी कर ली। लाइंस कर करके। very nice. Thank But do you all मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा प्यार। बेशुमार। But मुझे एक बात बताइए, do you think this show is going to be a game changer for all of y'all, or it's already It been has a game been. changer for y'all? It has changed the game only for us. It's been more than I expected, and I'm just blessed that we've come to a point where actually we're speaking with you on this platform and we're discussing how it's been a success. Yeah. That in itself for us, it's It's a successful. victory. So Now here's hoping for her talent to be unleashed and unveiled in front of the world. Yeah, even I'm hoping. because छोटी सी थी जब ने शुरू किया था। No, this please. Okay, they'll explain. But this is First so part में annoying. छोटी थी, फिर बड़ी हो गई। छोटी थी, फिर बड़ी होगी। Yeah, so my character, my child version,
teenage self of my got introduced in the first season. And this season my character has all grown up, and whatever attributes I've already spoken about. Yeah, so I think I'm really hoping for the best, and I hope the audience, the way they have showered the season 1 with so much of love, and they shower the same for season 2. Basically बहुत shower हो रहे हैं. Shower. समुंदर में नहा के और I'm loving this vibe. But tell me, आप for your character especially बहुत ही प्यार मिला. They like that brooding lover. Brooding तो अब आएगा. हाँ, but तो वो अभी आपका तो आपने look. कुछ देखा नहीं है. अभी बहुत कुछ बाकी है. Yes, but first season also आपने बहुत tease कर लिया audience को. Tease करने में जो मजा है ना, using words. वो हासिल करने में नहीं है. इनका दूसरा नाम ही थर्स्ट ट्रैप है. I agree. मैं thirsty हो जाता हूँ मैंने देख के. अच्छा, एक लाइन उनके लिए. ये एक ही ट्रैप है और यही मेरा वो है जो. But no, seriously tell me how इतना प्यार आपको ऑडियंस से मिल रहा है. People have really loved your character, the way you played. ये कैसा लग रहा है आपको? और बहुत सारे इमोशन हैं. It's like डर भी लगता है कि इतना प्यार एकदम से मिल रहा है तो वापस ले लिया तो you're going through so much, but somewhere, you know, it's as an actor when you are seeking that validation, which we all do, somewhere in the map of the craft and the work that you put in and the industry that you're in, you see yourself. You pinpoint and be like, oh my God, I'm finally there. I can see it. Even if it's a small dot, but I'm there. Yeah. वो dot को बड़ा circle बनने में शायद time लगे, but at least वो position तो है कि लोग बोल सकते हैं कि performance बहुत अच्छी है, दिखता एक certain way है, but काम बहुत अच्छा किया, मेरे लिए वो भगवान है. तो अब जब लोग वो कह रहे हैं, तो मेरी जितने सालों की मेहनत है वो रंग ला रही है. And I truly believe that it's my hard work, and I will take credit for it. Where it's due, and I must have done something and made the right choices to have been deserving of a character like Salim. So I'm very, very happy. I'm very, very satisfied, and my heart is full. But ये थोड़ा kind of pressure डालता है आपके next projects के लिए. How you would select it, जो करना है audience को पसंद आएगा नहीं, वो एक kind of pressure आ ही जाता है, वो knowingly unknowingly. मेरा pressure एक level तक रहता है. जैसे अभी season 2 आ रहा है, तो उसका pressure ये है कि इतना अच्छा अगर सीजन 1 के बारे में लोगों ने बोला है, तो सीजन 2 के लिए एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं नेचुरली. तो वहां पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार आई होप हम लोग उस पर खड़े उतरे उन लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे. बट व्हेन इट कम्स टू द अदर प्रोजेक्ट्स दैट माइट कम माय वे एंड विल इन द फ्यूचर, I will probably keep in mind about one thing for sure, is that to stay away from similar characters that I've played in the past, because कुछ नया करने का मन करता है, of course. कभी कभी हमारे हाथ में होता है, मोस्टली हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है. तो it's just about that you keep in mind that you've done something and you've done a good job at it, so let that be and move on to something better and bigger, and hopefully that should create a bigger buzz and receive a lot more love. शुभम, for you, पहले ही डेब्यू में आपने छक्का मार दिया. एग्जैक्टली, छक्का मार दिया. विद दिस ह्यूज सक्सेस, आपको भी ऐसा कोई प्रेशर लग रहा है कि नेक्स्ट जब मैं कुछ करूंगा तो इट हैज टू बी बिगर एंड बेटर एंड लार्जर देन लाइफ? कोई प्रेशर नहीं है इसका. इसके बाद कोई प्रेशर नहीं है. इसके बाद कोई प्रेशर होना भी नहीं चाहिए. अभी तो शुरुआत हुई है. इसके लिए मैं आंसर कर देता हूँ. कोई प्रेशर नहीं है इसका. और बहुत अच्छा काम किया है इसने. और ये अपने बस पैर अगर जमीन पे रखे तो बहुत आगे जाने वाले हैं भाई साहब. मेरे तो जमीन से जुड़े रहते हैं. हाँ. बट आप होटल के आसपास उड़ते हुए देखेंगे इसे. यार यही है जो बोल दिया भाईजान ने, that yeah, there's no pressure यार. It's just to be able to like do this, to stay as away from all the wrong things and just to find the God in the work. एंड मैं बस यही करता रहूं कि अपना काम कर पाऊं बस अच्छे से यार. दैट्स ऑल. जब हमने लास्ट टाइम बात की थी और मैंने आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था, आपने बोला अरे ये पहले रिलीज हो जाए, लेट पीपल सी हाउ आई एम इन द. तो अभी ऑफर्स आने चालू हो गए कि नहीं हो गए, या आप नहीं बताओगे? ऑफर्स वाली स्टेज नहीं है अभी. हाँ, बट पीपल हैव स्टार्टेड टेस्टिंग मी फॉर स्टफ, एंड अभी कुछ लॉक नहीं हुआ है, बट जब होगा तो मैं सबसे पहले आपको कॉल करके बताऊंगा.
I'll be waiting for that. आपने कैमरा पे बोला है ये, याद रखना. मैं ध्यान से देखिए इस दरिंदे को. यही करेगा उनको कॉल उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में. Yes, but ऐसे ही माहौल था सेट्स पे भी, because it's a very tiring and exhausting kind of a show. But वो हमें बीच में चिल भी कर लेते थे. जहाँ आशिम गुलाटी है वहाँ एंटरटेनमेंट है. ये डर्टी पिक्चर के विद्या बालन भी हैं. उसी चीज का तो पैसा मिलता है. और ये एक्चुअली वो है, क्योंकि ये भी उलाला करने लग जाती है सीन्स के बीच में अपने कमरे में. और इनका एक पर्पस है कि ये जहाँ पे भी होंगे ये किसी ना किसी को एंटरटेन करते हुए पाए जाएंगे. बट ऐसे लगते नहीं है. ही हैज अ वेरी हॉट बॉय डिमीनर है ना उसका. बट वो हॉट बॉय के पीछे एक बहुत बड़ा बच्चा है जो आप सबको नहीं दिखता है, जो हमें दिखता था सेट पे. But the best thing about Aashim is that he makes anyone around him very comfortable. Like, इसमें मेरा भी सेल्फिश इंटरेस्ट है ना. इसमें मेरा भी सेल्फिश इंटरेस्ट है ना कि अगर मेरे को एक्टर्स मुझे लगता है कि अगर कंफर्टेबल नहीं है तो ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम सब कंफर्टेबल हो ताकि हम अपना काम ठीक से कर पाए. Yeah, but that's a big thing. It's a good thing. But what was the most challenging part while shooting this? ये आपने दोनों सीजन एक ही साथ अपने आप लोगों ने दोनों ने मतलब वही चैलेंज था. हाँ, but physically, mentally, emotionally कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंज था? I'll have to say this कि as actors ना, I always feel that our brain, normal people would go about their regular jobs 9 to 5 or whatever they do, and they come home and they spend time with their family or whatever it is. But in a day in an actor's life, say a day in Salim's or Daniel's or Mehrunisa's life, what happens is that there is no linear format that we're shooting in, no right? Structure. So one scene you're doing where you have to completely break down and you have to come out of a war sequence, or you have to be completely happy and ecstatic, or you're doing something else. And the next scene would be completely different, right? Yeah. So your brain doesn't understand the emotions that you as a character would take yourself on. It's a journey that you go through a day of many miles, because you don't know the first scene would be when you're crying and the second scene would be when you're completely laughing. So you're psyching yourself out so many times, and that becomes it just keeps shocking the system. And that's a very challenging thing to do, because sometimes you are so engrossed in that moment that to come out of that and to completely wash yourself up and be like, now let's be happy. Yeah. Let's do this. Okay. And the thing is, you have to be completely honest to the first and the second and the last. Yeah. So you have to keep changing and you have to keep adapting and you have to keep doing that every day till you finish the project. Because between two scenes, I'm so sorry to interrupt, because sometimes between two scenes, we don't really get that time. Our brain doesn't get that time to process those emotions. Because जब हम shoot कर रहे होते हैं, एक होता है कि suppose हम लोग को जो call sheet मिलती है, हम वो हमारे lines करके आते हैं कि ये, लेकिन काफी बार ऐसा भी होता है कि हम जिस scene से शुरू करना चाहते थे वो नहीं लगता है पहले, लेकिन आपका ब्रेन तो ऑलरेडी सोच के आया है ना कि हम इस सीन से शुरू करेंगे. सो वी हैव अ टाइम टेबल इन आवर ब्रेन समहाउ, बट देन टू अडैप्ट टू दैट, जस्ट द वे ही सेड, एंड टू लाइक फॉर us to process that emotion, to absorb those emotions, it takes time. And yes, of course it takes. But there's a lot of aid also, like aid, yeah. In terms of हमारी तैयारी बहुत ऑलरेडी करके रखी होती है उन्होंने. आप लोग पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, एक पूरा वर्ल्ड तैयार करके रखा होता है हमारे लिए, हमारे टेक्नीशियंस ने, हमारे डायरेक्टर ने, सब लोग जो काम कर रहे होते हैं, ताकि हम लिटरली ऑन दैट स्टेज वी कैन डू आवर बिट. तो हेल्प भी होती है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चैलेंजिंग इस केस में थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट एजेस और बहुत ही अलग एडजेक्टिव्स हैं उन दोनों एजेस के, और बहुत ही अलग जज्बात हैं उन दोनों एजेस के. तो वो चैलेंजिंग था, स्पेशली टू शूट टुगेदर, बिकॉज अगर वो अलग अलग टाइमलाइन पे हम शूट करते तो वी कैन ब्रिंग अ लॉट मोर. बट दैट बीइंग सेड, you don't know where you will find what, and it's like a jigsaw with 100 pieces and these 100 scenes, and बहुत सारे वो पीस अलग अलग होते हैं, बट उनको जोड़ते एक किरदार बन जाता है बस. Absolutely. But there are a lot of actors जो जब ऐसे सीरियस रोल्स करते हैं या ऐसे पीरियड ड्रामा करते हैं या हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करते हैं, they have a process of either मतलब they go in a room, they don't meet people, they don't interact with. Yeah. What is your process? मतलब आप लोग ने individually कैसे अपने कैरेक्टर के लिए क्या प्रोसेस था आपका? Yeah, there different scenes demand different emotions and provokes different thought processes.
So naturally, the process sort of keeps changing with every scene that we do. Like if you're meant to be happy and ecstatic and like having fun, then that becomes the flavor of the moment. Right. But if you are if there's a heavy scene and if you are meant to be angry and you're fighting or you're crying, then naturally what happens is that, at least for me and I know for him as well, we lean more towards isolating for a bit, looking within. अपने कैरेक्टर के जो आपने बनाया हुआ है, कैरेक्टर की बैक स्टोरी बनाई हुई है, उसके दायरे में रह के आप you start thinking and understanding that, okay, how would this person react in this moment? Yeah. And if that requires me to do a certain or have a certain emotion, then I'll try to be calm, be reserved, but also just have a sense of calm and breathe through that moment. And music sometimes helps. Just conversation sometimes helps. Like talking about that scene, if I have a scene with Daniel, for instance, then if in that moment I feel like it's important for us to communicate and discuss and talk about what he's feeling and how I'd approach it. And sometimes it's also equally important to not discuss, so that we don't prepare, so that we're instinctive in the moment. So it totally depends on, it's very subjective, but this is how I approach at times. And sometimes I just leave it to the moment, because when you're going on stage or when you're going on the set, what happens is that you also have to be very open and adaptive to your director, because your director knows exactly what he's doing. He's the captain of the ship. So he would look at the scene and the scenario in a certain light. And if you are too over-prepped or you're too rigid about what you want to do, then sometimes what happens is that the moment you enter a set, you forget, you just believe that this is what I want to do, right? The director would show you something which would be conducive to that, to the set that he's made. The lighting would be a certain kind. So things change because the set has its own breath. It's vibe. You can feel it. It's palpable. Change The the director's body vision, the technician, sometimes the DOP would be like, okay, you know what? I think this lighting would be a lot better. So that'll change the dynamic of the entire thing that we had planned, It's the camaraderie of everyone So together. everybody, it's a camera beautiful angle. mix of people coming together and their vision. That's why it's so important to be in sync with your director's vision and in sync with everybody around, because this is not a one-man's show. Absolutely. You are because of Very everybody nice. else. Absolutely. Yeah, because Sorry. yeah. please go ahead. No. Please go ahead. There's this very beautiful thing that he told me once. I remember before I would go for any schedule, if there was like a very intense scene, I would text him that, listen, we can't talk for these hours or whatever. And he would be like, just shut up. That's his favorite thing to do these days, to ask me to shut up. So he told me this very beautiful thing on text. He said that, bro, just be in the moment, na? That's all. So at the end of all of this prep, it all crumbles down to this one thing, which is called, which we train for, Action which and we cut. imbibe, that it's that you just have to live in the moment between action and cut. And that's the long and short of it. And that's what my learning was, because otherwise there's no other way, because there's so much chaos and madness on a set. People are... I'm sorry, please go on. नहीं, I'm saying the preparation happens before. Like Yeah. exam देने जाते हैं ना, तो जिस दिन exam देना होता है ना, उस दिन तो पढ़ाई नहीं मजे होती करना है, उस दिन पढ़ाई नहीं होती, उस दिन मजे करने होते हैं. Correct. बट जो प्रेप होती है वो पहले होती है, और प्रेप भी मतलब हर एक बंदे का अलग तरीका होता है, और जब सेट पे जाते हैं ना तो फिर होता है खेल. That's when we enjoy. That's You why have to actors, when you go and wait for your scenes, it's the most irritating feeling, but we have to do it because there are other people involved as well. No? You can't be selfish. But when we go, I've always said this, that's the most beautiful time, because time का पता ही नहीं चलता, because we love what we do. And when you're on set, time ऐसे निकल जाता है. Unless you're completely tired and exhausted and you can't act more, which happens many a times. But that's how it is. अगर मैंने आपको एक सवाल पूछा कि आपके कैरेक्टर से आपने ऐसा क्या सीखा है, and that is going to stay with you forever, ऐसा क्या है? I think सलीम के कैरेक्टर से आपने क्या सीखा? I think जो प्यार जैसा प्यार सलीम ने अनारकली से किया है, जिस शिद्दत से उसने वो निभाया है, प्यार हो अगर प्यार नाम की चीज है जो है, तो वही है. अगर प्यार करो तो वैसे करो, वरना मत करो. Agreed. यार ये सीखा है कि कंडीशनिंग एक चीज़ होती है हमें चाइल्डहुड में जो दी जाती है हमारे पेरेंट्स से, हमारी सोसाइटी से, जहाँ पे हम बड़े होते हैं.
But that conditioning should not be so rigid, and that those values, those religious values should not be so rigid in a human being that तुम अपना खुद का दिमाग लगाना बंद कर दो. तुम इतने इन्फ्लुएंस हो जाओ अपने आसपास वालों से कि तुम सोचो ही मत, और तुम सिर्फ इट शुड बी ऑलवेज कम फ्रॉम योर ओन माइंड, योर ओन एक्सपीरियंस. इट शुड नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस दैट ओके किसी ने मुझे ये सिखाया बचपन से तो यही सही है या यही गलत है. ये दानियाल की सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे. तो ये मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करना चाहूँगा. What about you? Willpower and focus on that one thing, because and also patience, of course, because no matter what, रास्ते में distractions बहुत होंगे. Yeah. And it's very easy to get distracted like with anything, but once you have your willpower, if there's a will, there's always a way, and you stay focused, you will get there. I would want to take that from Erinissa. For all the actors listening who are trying to make it, that's another thing you can learn from Erinissa. Yeah. अपने audience को आप क्या कहना चाहते हो? They have loved part 1. We love What you about too. part 2? Very grateful for all your love. Really, really, with everything that I have, I am so happy and grateful that you've showered so much, and I just hope that you keep all of that intact and watch season 2, The Reign of Revenge, Taj, on Z5 on 12th of May, and give it more love and just enjoy the show. That's all. Ditto. Same pitch. Please give us as much love as you did the first time, and please give her a lot of love. Yeah, please. I was Because about to say it's that only. Thank you for saying it. It's Yeah, a thank you. Grand Slam debut, Debut. and she's done an exceptional job. Thank So you. please watch Smasher. out for her. Smasher. Thank you. We've said it all. Yeah. Yeah. So, Taj season 2, Reign of Revenge, 12th May. starts streaming on Z5 12th May onwards. Please watch it, and also let us know what you feel about the show.